Ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in here to Times Now. I'm Pranesh. We are at the Times Now Election News headquarters, decoding the numbers to you because these numbers are very, very significant. So would the election results of Haryana and Jammu and Kashmir also have some impact on the upcoming big elections in Maharashtra, in Jharkhand? And don't forget, you also have the all-important Delhi and the Bihar elections next year. So very, very fascinating details to talk to you about. Who's going to be the next Chief Minister of Jammu and Kashmir? We have the answer. Also maybe in Haryana, but just a moment. But first up, as always, a quick roundup of all our top stories we are tracking. The BJP zooms way past the halfway mark in Haryana. It's set for a historic third term in the state. Party workers celebrating with dhols at the Haryana BJP headquarters. The Haryana results also mark the BJP's very first big win after the Lok Sabha elections. BJP leaders are hailing Narendra Modi's magic. They say the reform bogey is back on track. After the Haryana result twister, the Congress is floating a new conspiracy theory. They say the Election Commission is under the BJP's pressure. Also have filed a written complaint now seeking accurate figures. We are also focusing on Jammu and Kashmir, where the Congress has won with its allies' crutches as the NC Congress alliance has powered through these polls gains, also seats at the expense of the PDP. After the National Conference picks up a thumping majority in Jammu and Kashmir, big declaration by the party chief Farooq Abdullah. He says, my son Omar Abdullah will be the next chief minister. He gets the crown, he says. The PDP then fails to make any mark in the Jammu and Kashmir elections. Even Mehbooba's daughter Iltija Mufti has conceded defeat from the traditional family seat of Bijbehara. With the BJP set for another term in Haryana now, the Prime Minister is expected to deliver a victory address this evening at 6 at the party headquarters. Let's look at the numbers very quickly, starting with Jammu and Kashmir here on the big screen. Look at the numbers. Out of the 90 seats, the JKNC plus, the NC Congress Alliance, stands at 51, the BJP 27, PDP at 2, the others, the independents, are 10 in number. Let's quickly look at the vote share here in Jammu and Kashmir. On the screen now, the vote share for the Jammu and Kashmir National Conference, the NC Congress combined, is 35.05%, the BJP at 26.25%, Mehbooba's PDP 8.65%. We are also expecting to hear from Mehbooba Mufti in a short while from now. And look at this, 30%. The independents have polled 30% of the votes. What's the story in Haryana? The Haryana story has surprised one and all viewers. Till about 9:30, there was a surge in the Congress numbers, but things began to change after that. 50 for the BJP, 34 for the Congress party. JJP and the AAP drawing a blank. Let's look at the vote share in Haryana. Look at the vote share for the BJP. An impressive vote share of the BJP. With 50 seats, it has a vote share of about 39.6%. Many in the BJP believe that this will go up to 41. The Congress sitting at 40%. The JJP 1.1%, and look at AAP 1.7%. The others, the independents here, polling 17.7%. That's the number as far as the two states are concerned. Jammu and Kashmir, the NC Congress obviously in the lead. Farooq Abdullah making it clear that Omar Abdullah could be the next chief minister. And in Haryana, we're being told that Mr. Saini will continue. And you know, Pranesh, this time you are about 44 independents contesting the election in Jammu and Kashmir. Sushil is with us here in our studios. We'll talk about that in just a moment. But let's also talk about the most interesting, the most fascinating story that you've seen ever since this morning. The story is, ladies and gentlemen, in Haryana, next door to the national capital. It's been nothing less than a jalebi election, quite literally, in the state, with the day beginning with a Pataka party at the Congress's headquarters in Delhi. You had a lot of these enthusiastic Congress workers all celebrating, ordering jalebis, distributing jalebis, and celebrating the trends that in the morning were in line with exactly what the exit polls predicted. But then comes the ultimate twist.
A little before noon, what happens is that the BJP surge turns into a hurricane, and within minutes, they defy all the exit poll predictions. As the numbers today stand, and you see that again on the top of your screens, a smiling Anil Vij is also what I just saw on our screens there. The BJP, ladies and gentlemen, is all set for a historic hat-trick in Haryana. This is unprecedented. In spite of a double anti-incumbency, in spite of the BJP there, recognizing their anti-incumbency, changing their sitting Chief Minister, Manohar Lal Khattar, who was a Chief Minister for 9 long years, and then they projected Naib Singh Saini as their face, the OBC face, underrated. But the very first big victory now coming in for the Saffron Party after the Lok Sabha results, many political analysts are of the view that despite the India alliance's narrative, the BJP is strongly retaining its hold in the Hindi heartland. And if there's any party that's really feeling the jalebi jolt in the Jharkhand, it is the Congress party. Now in Haryana, there seems to be no takers for Rahul Gandhi's caste census plank. He had, remember, been speaking about this again and again and again. The Khatakat model or his constant Agniveer bashing on, seat sharing, vote sharing, a lot of these details that he's spoken on. What we do know now is that the Congress, as expected, has cried wolf. They say that the Election Commission right now is being pressurized by the BJP. Now, why they say this? Because their allegation is that the counting is really going slow. There is a response earlier that has come in also from Jairam Ramesh. We quickly listen in to what they say, and the Congress is not ready to concede in Haryana. We are filing a complaint. We have, there are at least 8 seats in which 11 rounds of counting are over, and the Congress is in the lead. But that is not being reflected in the ECI website. That is not being reflected in all the channels that are showing the results. So this is a subtle way of the Union Home Minister using the ECI to put pressure on the local administration. Let's open this up. Shehzad Poonawala, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Sushil Pandit ji is still with us in the studio. Lokesh Jindal, Sarfaraz Wani, both political analysts. Tausif Shah, leader of the PDP. Ramesh Sabarwal, leader of the Congress Party. Ahmad Ayaz completes the panel. Shehzad, let me begin by asking you, how are you celebrating? Jalebi khayenge? What will you eat to celebrate? जलेबी दिखा रहे हैं आपको, वो जलेबी दिखा रहे हैं, शहजाद. Oh. प्रणेश ये कौन सा जलेबी है? ये नहीं एक मिनट शहजाद, 1 मिनट. ये जलेबी कौन सा, फैक्ट्री वाला है या ये गरम जलेबी है स्टॉल से? अब मैं आपको राज बता दूंगा तो पवन खेड़ा की पोल खुल जाएगी. बट ऑन अ सीरियस नोट, ये जलेबी बनाई गई है हलवाई के द्वारा, और ये जलेबी हम जनता को खिलाएंगे. सुबह सुबह पवन खेड़ा जी अपने नेताओं को जलेबी खिलाने में, तपस्या करने में थोड़े अति आतुर हो गए, पर उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा. अब वो इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे, जनता को भी गाली देंगे. पर ये जलेबी जनता को और कांग्रेस हवेली में क्यों गई, इसके पीछे कारण ये है प्रणेश जी कि जवान, किसान, नौजवान और सारे पहलवान, इनका सम्मान मोदी जी ने किया. और ये जो झूठ की दुकान, ये राम मंदिर का अपमान और देश को बंटवारे करने वाली दुकान जो है, उसको करारा जवाब दिया गया है. राहुल गांधी फर्स्ट इलेक्शन एज एलओपी हैज लॉस्ट द इलेक्शन एंड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर विनिंग फॉर द 3rd टाइम. अंडर हिम टुडे वी हैव अ प्रो इनकम्बेंसी अक्रॉस द कंट्री. गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, वी हैव सीन इन ऑल स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एवरीवेयर जहां मोदी है वहां परफॉर्मेंस डिलीवरी है, नॉट जस्ट डायलॉग डिलीवरी. एंड देयरफॉर जनता गेट्स जलेबी एंड कांग्रेस इज इन हवेली. अब रोमेश जी सोच रहे होंगे जलेबी तो हमें खानी चाहिए थी, ये शहजाद के हाथों में आ गई, ये शहजाद खा भी रहे हैं. वो भेजेंगे रोमेश जी, शहजाद भेजेंगे. रोमेश जी आपके पास जलेबी पहुंची सर? नहीं, हम तो no ma'am, we'll buy from Gohana. The Gohana jalebi is the famous jalebi which my leader said that. It's the right thing, I don't know whether you people have taken a jalebi from Gohana. I took in my lifetime. I visited Gohana so many times, for the campaign and all that before Rahul ji came across with jalebi. My submission is that we have not lost the election. We lost in Haryana. The BJP has won unethically. नहीं रोमेश जी, देखिए गोहाना से बहाना ये ठीक बात नहीं है. देखिए गोहाना तक बात ठीक है, ये तो बहाना हो गया. अभी तक सुबह तक सब हंकी डोरी था, ढोल बज रहे थे, जलेबी बट रही थी. अभी आप बोल रहे हैं कि ये डर्टी ट्रिक्स है बीजेपी का. ऐसे मत कीजिए. देखिए
सर आप पार्टी के साथ हमारा अलायंस होना चाहिए था, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा और हमारे को जो बंसीलाल की लेगेसी थी, भजनलाल जी की लेगेसी थी, उनको साथ में रखना चाहिए था. देयर आर सर्टेन फॉल्ट्स व्हिच द पार्टी हैज डन इट. वी विल इंट्रोस्पेक्ट दैट. पीपल ऑफ हरियाणा हैज नॉट रिजेक्टेड अस. People of Haryana has given more votes than Mr. Modi. There was an anti-incumbency. There is no doubt in Haryana. There is no doubt that. But unfortunately, we have not been delivering the number of seats. You can say like this. No, you So have we to are salute hopeful the that spirit. by Deepti, at 99 the Congress said Lok Sabha भी हम जीत गए, मोदी की हार हुई है. अभी यहाँ पे भी बोल रहे हैं देखिए हमको ज्यादा वोट मिली है, ये बीजेपी की Pranesh, हार. you know what we should do is, with the permission of all our guests, we should play out this reaction that has come in from Priyanka Chaturvedi. Romesh जी, आपको ये ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि आप ये माने ना माने, लेकिन आपके allies ये मान गए हैं कि भाई Congress needs to rethink. They are telling you in no uncertain terms before the big Maharashtra elections. You have more reasons to worry. Let's listen into what we've just heard from Priyanka Chaturvedi, where she really is putting the ball back in the Congress's court. अभी देखिए चुनावी नतीजे अभी पूरे आए नहीं हैं, पर जिस तरीके से जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में. डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है. और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है. So Priyanka Chaturvedi there is congratulating the BJP. Shehzad, she says बहुत-बहुत मुबारक हो आपको कि आप ये बढ़िया जीत आपने दर्ज की है हरियाणा में. लेकिन रोमेश जी, साथ ही साथ आपको तो बहुत ज्यादा चिंता करनी पड़ेगी इस समय. सीट शेयरिंग हुई नहीं है. आपको पता है कि सेना यूबीटी को लगातार ये लगता है कि आपने उनको शॉर्ट साइड किया हुआ है. यहाँ पर कैसे लड़ेंगे महाराष्ट्र का चुनाव सर? दीप्ति, नहीं मैम, वहाँ पे Yes, Shehzad, give me 30 seconds. 30 seconds after Romesh ji. Of the Congress party, please. हाँ बोलिए रोमेश जी, Maharashtra, बोलिए. we have a very senior leader of the Congress party who is in charge of Maharashtra, Mr. Ramesh Chennitala. Mr. Ramesh Chennitala is the in charge of Maharashtra. So we have a very well experienced leader. Like No, BJP, but she's telling BJP, you that the go to Congress ends micro up level. losing direct We are in fights, Maharashtra at the Romesh ji, micro which is the level. truth. In Haryana, कि जहां in पर भी Haryana. direct BJP versus कांग्रेस फाइट होता है, आप वहां हार जाते हैं. We have not lost in Haryana. In Haryana, if you go to the You haven't lost. मैडम, हम हारे नहीं हैं. हजार वोट से तो 15 सीटें हारे हैं. हम हार रहे 15. सर हार तो हार है ना. सीटें ये तो हारे 2000 नहीं से हार रहे है. हैं. शहजाद जलेबी मत हजार खाइए, वोट से हार रहे हैं. अभी We have not कांग्रेस lost. हारी नहीं है. शहजाद नहीं, हम गवर्नमेंट देखिए, अब उनको बोलने दीजिए. रमेश जी बोलने दीजिए. बयान है. हमें हाँ, इंट्रोस्पेक्शन देखिए प्रियंका जी का जो बयान है वो हरियाणा पे कम निशाना और महाराष्ट्र पे ज्यादा निशाना है. तो वो हरियाणा के लिए बोल ही नहीं रही, वो तो महाराष्ट्र में दबाव डालने के लिए बोल रही है कि भाई हमें घोषित कर दो. दूसरी बात, अभी क्योंकि गोहाना का बात किया इन्होंने, गोहाना में बीजेपी लीड कर रही है बाय 11,000 वोट्स. तो जहां राहुल गांधी ने फैक्ट्री मेड जलेबी के बारे में बोला, वहीं राहुल गांधी जी हार रहे हैं. ये हकीकत है. एनीवेज, ताउम्र रोमेश अग्रवाल यही गलती करता रहा. धूल चेहरे पर थी, रोमेश आईना साफ करता रहा. एक काम करते हैं बिफोर वी ओपन दिस अप टू मोर ऑफ आवर पैनल्स. रिमेंबर देयर इज अनदर क्विक ब्रेकिंग अपडेट एंड एन इंटरेस्टिंग वन दैट इज कमिंग इन फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, who says that the result, he says the same happened in Himachal. He's saying that the Haryana chief minister is still hopeful. Yes, Hold on to that he still jalebi. believes कि अभी जलेबी नहीं खानी चाहिए. शहजाद, तो हो सकता है कि आपके पास और जलेबियां उनको बचा के रखेगा, लेकिन सुक्खू की सुनते हैं. ना ये कि बहुत कम लीड थी. शाम के 4 बजे तक पूरे पता लगता है, क्योंकि तब थोड़ी सी करेक्शंस होती है. हिमाचल में भी ऐसे ही था शुरू में, बाद में शाम के 2-3 बजे के बाद रुझान बदले थे. आप उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस? निश्चित रूप से 10 साल की वहाँ लोगों की नाराज़गी है और वहाँ कांग्रेस की सरकार की हमें आशा भी है. Lokesh Jindal, what happened? Okay, we'll go to Lokesh Jindal in just a bit. Let's bring in the others.
सुशील साहब, आप सुन रहे हैं, ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि जलेबी अभी खाइए मत, हम हारे नहीं हैं, उधर एलाइज प्रेशर बना रहे हैं, कांग्रेस सेकंड फिडल रह गई है सब जगह। अब क्या करें, डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं। ये कह रहे हैं कि 1-2 घंटा और दे दीजिए, शायद कहीं से वोट आ जाए, शायद ईवीएम अपना मूड बदल दे, शायद कुछ और निकल आए नतीजा। उन्हें उम्मीद उनकी जायज है। फिलहाल उन्हें, उनमें से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर लोकसभा चुनाव के बाद इंट्रोस्पेक्शन कर लिया होता तो शायद हरियाणा में ये नौबत नहीं आती। उन्होंने हर चीज पर लीपापोती की है और आज एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव वो हार रहे हैं। अगर महीन एक एनालिसिस किया जाए तो पाएंगे कि जो ये खारिज कर देते हैं कि छोटी पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं, जेजेपी और आईएनएलओ, ये चौटाला परिवार की 2 पार्टियां हैं, इन्होंने मिलकर 5% से ज्यादा वोट ले लिए हैं। और फिर अगर आम आदमी पार्टी को जोड़ लें, 2.25% उनका वोट है, तो लगभग 7% वोट, जो कि एक एंटी बीजेपी वोट मैं मानता हूं, जिसमें से अधिकांश वोट जाट वोट है, वो अगर बटने से रुक जाता तो फिर इस चुनाव में, जो कांटे का चुनाव है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों 40-40% लगभग वोट ले रहे हैं, उसका क्या बढ़िया बदलाव होता, कितना जबरदस्त चेंज आता उस नतीजे में, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जहां कांटे का चुनाव हो, बराबर बराबर वोट मिल रहे हों और 7% एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस को मिलने से रह जाए, वहां तो भयंकर इंट्रोस्पेक्शन बनती है। और यही इस चुनाव की हेडलाइन है। और खासकर तब जब कांग्रेस जाट वोट पर अब आश्रित थी, उन्होंने जाट कंसोलिडेशन के माध्यम से हरियाणा को जीतना चाहा और चौटाला परिवार में कोर ऑफ द कोर वोट बच गया है, जो जाट वोट ही है। जी। एंड सुशील जी, क्योंकि आपने जाट वोटों की बात की, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिविया, यू नो, दिस इज श्रुति चौधरी हुज वन द तोशाम सीट। एंड सुनिएगा ये रोमेश जी, फॉर द बीजेपी इन द जाटलैंड में भाजपा की श्रुति चौधरी जीत जाती है, और ये आपके कांग्रेस का बैस्टियन था सर 2000 से। Absolutely. 2000 से सोचिए, 24 साल हो गए। In fact, BJP had put up 18 very strong Jat candidates. Yes. It may not have been riding on Jat vote bank, but its individual Jat candidates had huge traction in their respective domains. Bilkul. So I think there are a lot of mistakes, a lot of learnings that the Congress needs to take back home. Rahul Gandhi still has not said a word on this, Romesh ji. I'll quickly head into a break. On the other side, we continue this conversation. Don't go anywhere. Election Commission of India has responded to the concerns raised by the Congress party. Remember the letter written by Jairam Ramesh. This is the response by the Election Commission. Mohit Bhatt breaking this story first on Times Now. Let me quickly read this with reference to your memorandum regarding unexplained slowdown in updating of results of Haryana Assembly elections on the ECI website. The Commission notes that previously on June 4, 2024, the context of general elections, a somewhat similar concern was raised by the INC, which was ill-founded and dismissed by the Commission. Mohit, the Commission has cited data, hour-wise data, to say that there is nothing substantive about the claim that you're making. Well, yes, in fact, Pranesh, as you rightly pointed out, that is a detailed response coming in from Election Commission. You see, we saw that early morning when the trends were going towards the Congress way, Congress leaders were celebrating, they were attacking the BJP, and at that particular point, no questions were being raised on EVM or the Election Commission. But as soon as the results started going the other way, when BJP was leading, and as of now, while we speak, BJP is having the majority, but the counting is still going on. So the Congress party stated that there is a slowdown process of the process. The ECI calling out the Congress and saying ill-founded allegation. You know, Pranesh, it's so unfortunate that today Jammu Kashmir has seen a massive election exercise that entire world is praising. And at that time, just because you happen to lose one election, which you were thinking you were winning till 8:30 in the morning, so you start abusing the institutions. Congress party is a sore loser. It shows every time that उनके लिए संविधानिक व्यवस्था नहीं, परिवार की व्यवस्था ही important है. ये परिवार तंत्र वाले हैं. ये लोकतंत्र और संविधान तंत्र को नहीं यकीन मानते. इसीलिए अगर मैं तेलंगाना चुनाव जीतूं तो लोकसभा इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन कमीशन ठीक है. अगर मैं चुनाव हरियाणा में हारूं तो इलेक्शन कमीशन को गाली.
इलेक्शन कमीशन को इसलिए निशाना क्योंकि राहुल गांधी को हार से बचाना यही है इनका फसाना। इसीलिए मैं कहता हूं ये संविधान के नहीं, ये परिवार का अफसाना। Deepti, the letter by the ECI, the response by the ECI, I'm reading the last para. It says, in view of the above, I am directed to convey that the Commission unequivocally rejects your attempt to surreptitiously give credence to irresponsible, unfounded, uncorroborated, malafide narratives. Yes, and as the LOP, I think Rahul Gandhi must intervene. He must tell us whether he believes this narrative that the Congress is trying to whip or not, because this is dangerous then. You have upcoming big elections. If you win elections, everything is kosher. The moment, you start to lose an election, Romeshji, you can't always cry wolf. We'll quickly head into a break. On the other side, this non-stop coverage continues. Don't note.